सही है. So everyone, welcome to the Generation Gap podcast. I'm Taimur Mir, and that is, please introduce yourself. I am Daniel. This feels like one of those, awkward जो class में Awkward introduction fools. करवाते हैं कि हाँ like बिल्कुल. नाम बताओ, intro बताओ. हाँ नाम I बताओ. don't. Yes, we're I have both no idea. long-suffering cricket fans. Some have been suffering for a lot longer than others. And we decided to start a podcast. And Daniel, you would be very surprised to know that even in these early stages of our podcast, with only double-digit views, we've already managed to, garner a sponsorship deal. Would you like to know which sponsorship deal we have? That yeah, I definitely do. Absolutely. This program is brought to you by Pakistan Fielders Taxi Driving Company, and their motto: "We will drop you anywhere." So this is the program brought to you by this amazing company that never, ever fails to deliver. And as we've seen, this company continued to deliver in the previous match as well. और उसी मैच को हम डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. And so let's start with the match, and let's start in a chronological order. Obviously, आगे पीछे नहीं चलते. Let's start with the first innings श्रीलंका की, and of course the power play, जहाँ पे हम सबको लगा कि भाई मैच तो यहीं ख़त्म हो गया है. और जिस तरह से Yeah, पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग कर रहा था, ओवरऑल इट वाज just seemed like it was a formality at this point कि यार ये तो हम जीते हुए हैं पक्का. So what were your impressions? Let's just start off with the power play first of all. yeah. I think it's hard to go past the idea that like हम जीत गए थे because like 58 for 5 हो गए थे ना, something like that. हाँ And like बिल्कुल. by that point, like I do want to say it, there's only one credit to give here, which is Haris Rauf. I think Oh, Haris Rauf is at the point now where I think he's even better than Shaheen. And we're not really giving him that much credit because Shaheen and Haris Rauf let's is like a tape ball let's not get bowler. carried Just away. वो yeah, क्या कहते हैं वो one swallow. Let's not get carried away. वो क्या कहते हैं ना, one swallow does not make a summer. So true, but at the true. same time I would like to say कि चलो I would probably sign my Haris Rauf apology form to some extent. Although like, I was never like that against him. मतलब ग्रुप पे बहुत बार मैंने उसके बारे में मजाक से कहा है कि यार हारिस राउफ जो है ना हमेशा गंदी बॉल पे विकेट लेता है. I would always admit कि वो विकेट लेता है, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा वो गंदी बॉल पे लेता है. I don't know what exactly he does, and this is the first time where I've seen Haris Rauf actually look like a lethal bowler. Like ये नहीं थे कि अच्छा ठीक है वो बस लाइन लेंथ करा रहा है और every now and then किसी बंदे ने कोई गंदी शॉट मारी और वो आउट हो जाएगा. This time लग रहा था कि even if they're trying to stop his ball, they will still get out. ये पहली दफा मैंने हारिस राव को इस तरह से करते हुए, and this was a level of bowling I've not seen since maybe peak Shoaib Akhtar. क्योंकि I mean Yeah, these kind of spells were something he used to do, like on the few occasions when he wasn't injured, when he would come in and he would like look like कि हर बॉल पे विकेट लेना है, हर बॉल 150 प्लस पे जा रही है, स्विंग कर रही है, सीम कर रही है, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. So I mean that yeah, I've not seen a spell like this in maybe more than a decade. I think last time कब वो खेला था 2011 में खेला था, and even then he was that good. But I think at least 10-12 साल के बाद I'm seeing spell of that caliber. Maybe आप कह सकते हैं जो spell उसने करवाया था, what was his name, जो हमारा लेफ्टी था in the World Cup. हमेशा मैं भूल जाता हूँ वो um, क्या Amir, नाम है अपना जो Amir as well. 2000 नहीं जो हमारा दूसरा था यार, जिसने वो we still lost the match to Australia, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने करवाया था, जिसमें वो कॉन्स्टेंटली Babrias. वहाब रियाज. हाँ हाँ वहाब रियाज का वो जो स्पेल था वर्ल्ड कप में. I mean that was probably like an amazing display of fast bowling, जहाँ लग रहा था literally हर बॉल पे वो एक विकेट निकाल लेगा. After that I think probably this is the most impressive spell I've seen from a Pakistani fast bowler, or maybe something जो शाहीन ने maybe कराई थी वर्ल्ड कप के अंदर for the first 2 overs or so. तो Yeah, yeah. मतलब really amazing spell. I didn't really know that Haris Rauf had it in him. And the pace is definitely something that has really surprised me, because I did not think he was capable of going like above 150 consistently. I don't think anyone was in this side, but I mean, props to him. He did an amazing job, and certainly the highlight of the first 5 overs, and everyone else. I think all was also was doing a really good job. I think Asnan was maybe a bit off the ball. I think in the previous match he was a lot better, and उसके अलावा जो है who else did you have in the opening? And Naseem also I looked don't really good to be. know was good at death वैसे. But Hmm? like so like
before I go into Hassan, I do want to build my case here because I didn't want to like pass verbally. It's basically I think it's pace with control that really sells me on him now, because it wasn't just the fact that he was quick. It had उसके पास पूरा control था ball पे. At that pace, it's a phenomenal trait, and only a few people have done that in history. I think Waqar is there. Shoaib Akhtar was there at one point, and Mitchell Johnson was there. I think every time someone has been able to control their ball at a pace like that, they have been phenomenal. That's what Haris Rauf did. And the case is तरह बनता है कि like you should look over भी करा लेता है. Hmm. He does that. So like and then he has like a very lethal out. It's funny how he idealizes like Dale Steyn and like उसका भी outswing आता है. हाँ, Pace है, and then the slower ball is just it's just हाँ, really good amazing to story. watch. So in हाँ, that sense, to be intelligent bowler, like क्योंकि अभी तक मेरा ये ख्याल था कि अपनी intelligence पर ज़्यादा चल रहा था more so than his bowling skill. That's always something I felt yeah, about him. yeah, he seems like a smart bowler now. It's also like उसके जहन में कुछ चल रहा होता है. So there, he's like basically what Hassan Ali should have been. So in a lot हाँ, of so yeah, in that sense, I think it's a phenomenal talent. Yeah. As for Hassan, I didn't like Hassan ki bowling that much, and maybe because see, I don't want to like put down a Pakistani bowler like that because हमने consistently ये देखा है कि ये लोग कोई भी bowler हमारी टीम में आता है, खास तौर पे post मिसबा, वो आता है, he's not that good, and then he's phenomenal. So I think he needs some international grooming जिस तरह शाहीन को मिली, हारिस रऊफ I को think he मिली, did well. I think हसनैन और दानी भी उसी तरह. potential नजर आ रहा है. Like in the previous game against Sri Lanka, he looked really good. Like उसके जो पहले एक दो overs they were phenomenal. And इसमें Yeah. he seemed a little off his line in length. उसमें ये थोड़ा मसला आ रहा था. So he's a bit inconsistent, which is understandable. I mean वही बात है कि he's young, he doesn't have that much experience. और अभी उसका वो कहते हैं तड़के तड़के उसका action change हुआ है. So given that he's actually playing international cricket and still bowling at that pace after just after changing his action is actually pretty impressive. So I would actually give him a lot more time. Like वही बात है कि he might not get much time क्योंकि अभी शाहीन ने वापस आना है और even Dhani was looking pretty decent when he was bowling. So competition at least in terms of like it's quite phenomenal. Yeah. क्योंकि वही बात है कि चाहे जो कुछ भी हो like एक गम है मैच हारने का and all that, but I will say कि it is quite something after so long to have a Pakistani fast bowling lineup जहाँ पे मतलब हर बंदा 145 150 करा रहा है इतने अरसे के बाद जहाँ पे मतलब I mean I'm sure you remember that era, you were born in that era or you at least started watching in that era कि जब राना नबीदुल हसन और इस तरह के बंदे जो है वो आपके बॉलिंग लाइनअप में होते थे और राहत जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं. The fastest guy you have is वहाब रियाज essentially. Yeah. Yeah. वो मतलब एक काफी डार्क पीरियड आपने देखा हुआ है हमारा जिसमें मतलब बेरली मतलब एक बॉलर होता था जो मे बी 145 तक कराता था और उसके अलावा आपके पास कोई बंदा था ही नहीं. एवरीवन एल्स वुड बी लाइक मे बी अराउंड 130 140 के बीच में कराने वाले मीडियम पेसर्स. इतने ज्यादा बॉलर नहीं थे जो तेज थे. हाँ, exactly. Well, I think for some reason this has actually started happening a lot more. Maybe it's because of T20s or something. I don't know क्या चक्कर है लेकिन पिछले कुछ अरसे से we've seen a lot more ballers who are close to like 145 150 कराने वाले bowler. In पाकिस्तान में अब तकरीबन I think every single one of our bowlers is that pace. I think I remember there was a graph as well showing the most number of balls bowled above 140 and Pakistan was like miles ahead of everyone else. Like हमने कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा कराई थी balls. Because like literally every one of our bowlers can bowl above 140. So वही बात है कि that is actually quite a different. All of them are decent bowlers as well. कि आपका वही बात है कि Dhani is a good bowler. Hasnain I think will be a great bowler as well. Naseem has picked up his game considerably. He looks really good as well. Shaheen of course still yet to come back. तो स्टार है. हाँ वही बात है कि these would like be our main वही जो आपने कहा था ना I think I would credit you for that name and I would definitely going to use that name double Shah from now on because the moment they actually start bowling together Yeah. I feel like that name has a lot of legs. तो जो double Shah हमारा attack है ना I think that is going to be quite a phenomenal attack and I hope they kind of carry on. Oh, it's triple Shah. Triple Shah? शाहनवाज खानी. अच्छा हाँ अगर वो आ जाता है तो if he does actually make his क्योंकि धानी को तो मतलब उन्होंने कहा है कि यार किसी ने चाय भी तुम्हें पिलानी है किसी ने बिस्किट भी तो खिलाने हैं ना तो फिर आप बाहर ही बैठे आपकी बारी अभी नहीं आने वाली तो वो ड्यूटीज किसी और को संभाले कोई और संभालेगा ड्यूटीज तो फिर उसके बाद
तो बहरहाल आई मीन अभी वही बात है दैट फॉर मी इज क्वाइट हार्टनिंग बट चले हमारा पहले 5 ओवर्स गुजर जाते हैं, लगता ही है कि मैच हमारे हाथ में है, एंड देन व्हाट द हेल हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, आप मुझे बताएं. It's very hard to memorize his name. I think it's called Rajapaksa, right? राजपक्ष, हाँ राजपक्ष. I should come prepared with. But like that was one of the best batting displays I've seen in a long time, considering the fact that like they were in immense pressure. Final के मैच में 5 विकेटें गिर गई और आपने एकदम से पार्टनरशिप बना ली. That was very phenomenal. And I think किसी भी पॉइंट पे लग नहीं रहा था कि वो डिफेंसिवली खेल रहा है. लाइक बीच में शुरू में आई थिंक उसने किया है, बट लाइक उसके बाद से इतने प्रेशर में आप अटैक भी कर रहे हो बहुत आराम से, यूर स्मैशिंग देम आउट ऑल ओवर द पार्क. 171 बनाए थे ना, तो 71 तो उसके ही थे. तो लाइक दैट वाज अ phenomenal inning. And Hasaranga did a very good job. As I think he occupied that all-rounder role, or फिर वो जो Raja Paksa था, he was more of the proper Absolutely. batsman. Yeah, And and well, and I Nasser is that was extremely valuable at this point. I think he will be. I don't know already उसका क्या scene है T20s में किस तरह से, but अगर अभी भी तक नहीं था तो he definitely will be, a huge player in T20 leagues around the world very soon. So yeah. and absolutely Rajapaksa ki innings, I think वही बात है कि a lot of our focus has been on the mistakes made by the Pakistani team, but I think even you mentioned this to some extent कि we have to sort of put our hands up on certain occasions, just say कि they play phenomenally. ये बात भी है Yeah. कि there was some really phenomenal innings there under extreme pressure that, क्योंकि बात ये Pakistanis bowled really well for most of the game. इवन लाइक हम अब कहते Yeah. हैं कि यार बीच में नवाज को नहीं लेके आना चाहिए था और ये इफ्तिखार चाचू कहाँ से आ गए, लेकिन बात ये है कि इफ्तिखार चाचू विकेट इन द फर्स्ट ओवर, राइट, सो इट मेड सेंस टू Yeah. ब्रिंग कीप हिम देयर. सो आई मीन दोस डिसीजंस सीम्ड Yeah. समवट लॉजिकल. तो उस टाइम तक लग रहा था कि कुछ भी वो कह रहे हैं पाकिस्तानी, एवरीथिंग इज वर्किंग, एवरीथिंग गोइंग अवे, एंड देन सडनली दे play that. But I think this was perhaps a triumph of tactics in a way as well, कि जो इनका पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले था, जो उन्होंने सोचा था कि यार वे जस्ट गोइंग टू कीप अटैकिंग थ्रू आउट द इनिंग्स, हमने रुकना नहीं, हमने स्लो डाउन नहीं करना, क्योंकि इट्स अ 20 ओवर गेम, स्लो डाउन करने का फायदा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू टेक 10 विकेट्स इन 20 ओवर्स. हो सकता है बट इट्स रेयर, सो जस्ट कीप हिटिंग थ्रू आउट. और चाहे हर बंदा 20-20 रन भी करके कंट्रीब्यूट कर ले तो विल गेट 20. वही बात है कि that's their strategy, and I think in a way this was the perfect sort of a clash of those two opposing ideologies as well. Because on one hand you had Pakistan's sort of slow and steady strategy कि शुरू में slow start करें और end पे जाकर हमने hitting करनी है, and then you had the Sri Lankan strategy कि ठीक है जी, and also the Pakistani strategy of the top three playing most of the balls and getting most of the runs, which is what we've been doing for the Yeah. last 2 years. And यहाँ भी उनका था कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, nobody gets big runs, everyone contributes, everyone plays quickly, हर बंदा जो है वो तेज रन मारेगा, एंड ऑफ द डे टीम स्कोर जो है वो हमारा हमेशा 180, 190, 200 के आसपास होगा. तो आई थिंक इन दैट सेंस वो एक उसके बीच में कंपटीशन भी था, ऑल्दो वही बात है कि देयर आर अदर एक्सटेन्यूएटिंग फैक्टर्स, बिकॉज पाकिस्तान वाज आल्सो स्कोरिंग 200 क्वाइट कंसिस्टेंटली बिफोरहैंड, तब तक हमारे टॉप 3 चल रहे थे. मसला ये है कि टॉप 3 में से हमारे 2 लोग चल ही नहीं रहे थे. And coming to that part of it, let's put the Pakistani innings, and then let's get into like a bit more deeper analysis at this point. क्योंकि एक तो वो जो हमारी strategy थी top 3 वाली, I mean there's a lot of criticism of that, and I think some of it is genuinely valid, so I'll discuss both sides of it. क्योंकि अभी I mean there are two people who I greatly respect, Harsha Bogle, and there was I think Rehanul Haq as well, who brought up this point जहाँ पे उन्होंने यही बात की थी कि यार we are talking a lot about the Pakistani middle order, and we're talking a lot about maybe Khushdil perhaps, and Asif Ali and all these people not being able to, Iftikhar for example, not being able to go out there and score quick runs. लेकिन उसने कहा था आप खुद मुझे बताएं कौन से प्लेयर्स हैं, चाहे आप एबी डिविलियर्स को लेके जाए किसको भी ले जाएं, जो हर मैच में जब भी आए उन्हें 10 रन पर ओवर स्कोर करना पड़े. How many people can go and do that every single time? और हर दफा यही हो रहा था कि every time they would go into the game they would need to score 10 runs and over. कभी कभार तो मैनेज कर लेते थे, but they couldn't manage it every single time. So there was that genuine issue जो कि मतलब these two people brought up, and I do agree with it to some extent कि हाँ ये एक मसला तो है. But then again there's also this sort of एक वो कहते हैं ना कि थोड़ी short sightedness भी कभी कभार मुझे लगता है आ जाती है कि
जब आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है लेकिन आपके उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले प्लेयर्स जो हैं उनकी फॉर्म खराब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सारी स्ट्रैटेजी पिछले 2 सालों से रही है कि हमारे टॉप 3 जो हैं दे प्ले लाइक 60% ऑफ द बॉल्स एंड दे गेट लाइक 70-80% ऑफ द रन्स एज वेल। तो उसमें Yeah. अभी मसला ये था कि आपके टॉप 3 में से 2 बंदे तो सिरे से चले ही नहीं, उनका वर्ल्ड कप मतलब दिस वाज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट्स दे हैड इन अ व्हाइल, क्योंकि अभी मतलब आई मीन टू बी ऑनेस्ट बाबर के जो फॉर्म है वो भी मतलब लिटरली, जो मैंने कहा था आखिरी जब वो आउट हुआ था, मैंने कहा जब आपका बुरा वक्त आता है तो आप वाइड बॉल पे भी आउट हो जाते हैं, लिटरली ये बाबर के साथ हुआ था और फखर के साथ भी यही है। आई मीन दैट वाज लाइक द परफेक्ट इन दोस टू बॉल विद द परफेक्ट इनकैप्सुलेशन ऑफ देयर एंटायर टूर्नामेंट, कि जहां लिटरली एक बंदा जो है वाइड बॉल को शॉट मारते हुए आउट हो गया और दूसरा बंदा पहली बॉल पे ही आउट हो गया। तो वो उस तरह होता है, जबकि आई कंसीडर कि फखर वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन लाइक द प्रीवियस आई थिंक पीएसएल। तो मतलब उस तरह से कि और उससे पहले भी ही बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान फॉर क्वाइट अ व्हाइल। अभी Yeah. इस घटिया रन ऑफ फॉर्म से पहले ही एक्चुअली बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर अस, क्योंकि वही बात है आपके टॉप 3 बहुत मुसलसल परफॉर्म किए जा रहे थे। रिजवान वाज द ओनली पर्सन हु केप्ट स्कोरिंग, बट वही बात है कि ही नीडेड अदर पीपल अराउंड हिम एंड फखर वाज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि फखर वाज द ओनली वन अमंगस्ट दीज 3 who could actually once he gets settled could go at a higher rate, like वो एक दफा जब खड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद वो 250-300 के स्ट्राइक रेट पे मार सकता है। बाबर can't really do that. Rizwan to some extent can do that. Give me a second. Hmm. Can you give me a हाँ. second? We can cut this part out. Hmm. मैं कार्ड इज प्लेइंग विद अ वायर, जिससे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है एंड मेरे लैपटॉप में बैटरी नहीं है, सो इफ देयर इज अ शट डाउन इट्स बिकॉज ऑफ माय कार्ड। सो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा तो बेसिकली क्या बात कर रहा था इस पे? हाँ, आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट रिजवान। या मैं कहता कि बेसिकली फखर का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियलाइज कि जो इनकी स्ट्रेटजी थी उसमें फखर इज द ओनली वन ऑफ देम हु कैन एक्चुअली गो आउट एंड वंस ही गेट सेटल्ड कैन प्ले एट अ 250-300 स्ट्राइक रेट। बाबर विल नॉट बी एबल टू डू दैट। बाबर का वही स्ट्राइक रेट है वो 130-140 पे ही रहेगा, और रिजवान कैन डू दैट टू सम एक्सटेंट। रिजवान कैन गो अप टू लाइक 180-200 के आसपास, 160 180 maybe even, but वही बात है कि डिपेंडिंग ऑन हिज फॉर्म एंड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द बॉलिंग एज वेल, लेकिन वो उस लेवल पे जाएगा। तो वही बात है कि ही इज द ओनली वन अमंगस्ट दोस 3 हु कैन एक्चुअली डू दैट। सो अ पार्ट ऑफ मी इज सेइंग कि यू नो मे बी द स्ट्रेटजी वाज रॉन्ग and it couldn't have worked, but also there's a part of me that says कि you know maybe वही मसला है कि स्ट्रेटजी तो ठीक थी लेकिन अब उसको अप्लाई करने वाले बंदे जो है वो शायद ठीक नहीं थी। वो कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली जो स्टोरी है कि मे बी द स्ट्रेटजी इजंट रॉन्ग, लेकिन वही बात है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? घंटी बांधने वाला बंदा नहीं रहा तो फिर देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट स्ट्रेटजी? सो इन अ वे दैट कुड बी एन इशू, बट हाउ डिड यू एक्चुअली सी इट? yeah, can you hear me? I think हाँ, थोड़ा सा interruption आ रहा है। so हुआ था Yeah, so इंटरप्शन, I think बट ये I have a lot to say in this department, and I'm gonna take India as an example, right? First of all, I think I saw Harsha Bogre, or I think no, it was Sanjay Manjrekar that pointed this out. Sanjay Manjrekar, I'm not sure, was a very prominent Indian, but like his idea was that this thing that we have of like T20 में कि हमें anchor करनी innings, it's a nonsensical sort of strategy, and मुझे समझ नहीं आता है कि पिछले 25 सालों से जब भी कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर प्रेशर में आता है वो रोकना शुरू हो जाता है। आई डोंट गेट दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी। हम उस दौर में रहते हैं कि हम प्रेशर में आ जाओ आप आउट हो जाते हो ताकि दूसरा प्लेयर आके मतलब फ्रेश स्टार्ट ले, राइट? बट राइट नाउ वी हैव दिस मेंटालिटी वेयर इट्स लाइक ओ हम प्रेशर में आ गए तो हमें हमें इनिंग्स को एंकर करना है, व्हिच दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी डज नॉट वर्क। मैक्स नो, that sort of mentality does not work in like T20, and उस सेंस में क्या कहते हैं रिजवान की इनिंग्स कम्स अक्रॉस इज वेरी नॉनसेंसिकल। क्या किया 50 रन बनाना क्या दी द डे? यू कुड आर्ग्यू दैट वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ हिम। सो ओडीआई में समझ आता है राइट कि एक मेंटालिटी है कि चलो आगे से विकेटें गिर रही हैं बट एक बंदा स्टेडीली रन्स बना रहा है तो कुछ तो हो रहा है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल थिंक कि वो एक लूजर्स मेंटालिटी की इज्जत से हारना है, तो वो भी एक अलग एक है। वन थिंग बट आई एम गोना टेक अ कॉन्ट्रास्ट विद लाइक इंडिया। हम लोग बहुत कंपेयर करते हैं अपने आप को इंडियन प्लेयर्स से, बट लाइक इफ यू लुक एट द T20 प्लेयर एंड यस दे हैवंट प्लेड दैट वेल, बट दे आर इन लाइन विद व्हाट मॉडर्न T20 शुड बी, बिकॉज रोहित शर्मा, केएल राहुल, क्या कहते हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, राइट?
they also have a top 4 strategy. Top 4 के बाद they get into trouble, right? हमारा top 3 है, उनका top 4 है. But the only difference is कि all 4 of these players are very good at switching gears, and our top 3 sucks at switching gears. Yeah, So वही रोहित absolutely. शर्मा कंसोलिडेट भी कर लेगा innings, एंकर भी कर लेगा, एंड जब मारने का वक्त आएगा तो 300 के स्ट्राइक रेट पे मार रहा होगा. सेम विद केएल बिल्कुल राहुल एंड सेम विद क्या कहते हैं ऑब्वियसली विराट कोहली एंड लाइक Exactly. सूर्य कुमार यादव सब, Exactly. राइट. बट लाइक हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनको हम बैट्समैन कहते हैं प्रॉपर, बिकॉज सारे तो एक ऑलराउंडर है, 3 तो बैट्समैन है हमारे पास, ये एक अलग मसला है. बट लाइक जो प्रॉपर बैट्समैन हैं दे आर एसेंशियली बोनाफाइड ओडीआई प्लेयर्स. एंड टू बी फेयर रिजवान से तो ओडीआई भी नहीं खेली जाती, तो लाइक आई डोंट नो क्या मेंटालिटी है उसकी. बट लाइक दे they're not really good at switching gears. And the problem is domestic में ऐसा कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा जो gears effectively switch करता है. We're talking about bringing Shan Masood in, and that could help obviously. But I think अगर श्रीलंका जैसी सिचुएशन फिर से आई तो शान मसूद भी नहीं खेल पाएगा. हमें प्रॉपर अटैक करना नहीं आता, हमें प्रेशर डालना नहीं आता. And that's because, and this is criticism on the coach, this is because आगे से बैठा हुआ भी तो मोहम्मद यूसुफ है ना. मोहम्मद यूसुफ ने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट ऐसी खेली है. We're bringing in coaches who haven't taken modern classes in coaching. We're just taking in because they were good players, and फिर वो ex mentality भी लाते हैं, and that's sort of harmful. Like अभी you're talking about like जिस तरह रिजवान ने खेला है, this was he played like मोहम्मद यूसुफ essentially, and where did that get us? Exactly. So yeah, I mean, this sense, I think you're kind of reiterating the point that I was making as well. कि वही बात है कि in that sense it kind of reiterates his importance. फखर की importance भी कहती है. फखर was the only one of the top 3 that could actually switch gears to some extent. अगर जब वो form में होता है at least. जब वो चल पड़ता है तो उसके बाद he has this ability to suddenly go ballistic. But वही बात है कि ना रिजवान ballistic हो सकता है और वही बात है कि बाबर बिल्कुल नहीं हो सकता. तो Rizwan still has some capability of going ballistic every now and then, but वही बात है कि and again and I think this was a larger discussion that we had as well, जो भी आपने mention भी किया कि yes there is a genuine failure at the domestic level as well, कि literally कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो मैं कहूँ कि अच्छा जो आ सकता है and who's a decent replacement. Again शान मसूद वाली बात बिल्कुल valid है कि शान मसूद अगर आ भी गया तो वो क्या पट लेगा. Yes, he'll be able to score more consistent runs than Fakhar, for example, अगर फखर की जगह पे आता है, लेकिन at the same time he does not have the gears that Fakhar has. कि फखर जो रोल कर रहा था, which was कि once he gets settled, he can suddenly make quick runs, वो उससे भी नहीं होने वाला. The only person who can, वो जो हमने नाम दिया था 2-3 लोगों का जो कि ये कर सकते हैं. There's शर्जील, जो कि फिक्सर है, जो कि फिक्सर, और दूसरा है आजम खान, जो कि फिटनेस का इसका मसला है. So these are the only guys that I can think of जो कि मतलब आपके डोमेस्टिक से आ सकते हैं जो क्विक रन्स. मे बी मैंने कहा था कामरान गुलाम टू सम एक्सटेंट, बट कामरान गुलाम इज सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द टीम दैट वी हैव एंड ही इज नॉट इवन प्रूवन एट द इंटरनेशनल लेवल आइदर. मे बी कैन कम इन प्लेस ऑफ आइदर खुशदिल और इफ्तिखार. टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि उनकी जगह पे वो आ सकता है पॉसिबली अगर उनको उन्होंने रिप्लेस करना है तो, क्योंकि खुशदिल तो बिल्कुल नहीं चला मेरे हिसाब से. इफ्तिखार ने फिर भी थोड़े बहुत रन तो मारे थे एटलीस्ट फाइनल में बिफोर ही गॉट आउट. लेकिन आई डोंट नो खुशदिल इज बीन ब्रिंगिंग बिकॉज उसकी बॉलिंग भी बिल्कुल यूज नहीं हुई. ऑफ ऑल पीपल उससे बॉलिंग जब करवानी थी उन्होंने तो उन्होंने इफ्तिखार से करवा ली, उन्होंने खुशदिल से फिर भी नहीं करवाई. तो वो एज एन ऑलराउंडर भी जो just to add to that, खुशदिल की टीम में जगह नहीं बनती because as long you can either play नवाज या खुशदिल because they're essentially the same player ना in terms of impact. So like I don't get this idea कि दोनों को खिलाना. नवाज स्ट्राइक भी उससे बेहतर कर रहा है और नवाज बॉलिंग भी उससे बेहतर कर रहा है और नवाज फील्डिंग भी उससे बेहतर कर रहा है. तो वही बात है कि ही डज नॉट. मैं भी कह रहा हूँ कि आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि पैसेंजर्स पर बने हुए हैं and some of that is true. Like मैं कह रहा हूँ कि I would, if he was in form, then I would have Fakhar in the team because he does bring a lot to the team when he's in form. Because obviously we don't have any player who can actually switch gears. So he's the only one that can actually switch gears. And at this point, while he is not making any runs, so he's a liability because he always ये भी नहीं कि वो एकदम आउट हो जाएगा कि बस आया और उसने हिटिंग किया चला गया. वो 18-20 बॉलें ज़ाया करके जाएगा मोस्टली और उसके दौरान उसने रन भी कोई खास नहीं मारना. तो वही बात है कि उससे बेहतर है कि यू ब्रिंग इन समवन हु स्कोर्स कंसिस्टेंटली लाइक शान मसूद के 18-20 बॉलों पे शायद वो 25-30 रन मार ही लेगा. सो यू हैव एटलीस्ट अ कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी दैट वे. आपको पता है कि ठीक है यार बंदा इतने रन तो मुझे दे ही देगा और उसके साथ आप थोड़ा बहुत सेटअप कर सकते हैं. देन यू नीड टू अगेन कुछ दिल को तो आपको निकालना पड़ेगा. इनफैक्ट वही बात है जिन बंदों की हमने बात की थी, आई प्रोबब्ली वही बात है कि रिकंसिडर इट एज वेल.
क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि यार खुशदिल की, इफ्तिखार की और फ़खर की जगह तो बिल्कुल नहीं बनती। अभी स्टिल अलाइंड ऑन दैट कि इन 3 को हमें निकालना पड़ेगा, और डू यू फील लाइक कि मे बी चलें इफ्तिखार की जगह है, मे बी ही कैन स्टिल बी इन द टीम, बट यू नो व्हाट डू यू थिंक, और डू यू स्टिल एग्री कि इन 3 को तो निकलना पड़ेगा? या आई थिंक इफ्तिखार की जगह तो फिर भी बन जाती है। आई एम नॉट अच्छा, अगेंस्ट इफ्तिखार। आई थिंक जब प्रेशर रिलीज करने की बात आई ना, एंड ही स्टार्टेड हिटिंग, आई थिंक he smashed around quite well. And in that regard, you can see a player that can switch gears pretty effectively. Consolidate कर लेता है और फिर मार भी लेता है. So maybe giving him a few chances, maybe giving him some time to sort of like make his place in the team would be helpful. Because again, I don't think उसने बुरा किया इस मैच में. But like I सही। think हम मैंने नोटिस किया है कि इफ्तिखार से लोग चिढ़ते बहुत हैं ज़्यादा. I don't know. हाँ, वो वही पुराने मिसबा की यादें उनको आना शुरू हो जाती है। नहीं, जिस लोग से सिमिलरिज्म कह भी रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लगता है कि मिसबा की कॉपी खड़ी हुई है वहां पे। हाँ, Like मैं कहता लोग कि ज़्यादा. मैं कहता हूँ खास चिल्डी की वजह ये भी है ना कि लोगों को मिसबा याद आ जाता है उसे देख के, इन Yeah, फेयरनेस। yeah. वो भी एक मसला। Although, to be fair, बुढ़ापे Misbah was से actually इशू a है. good T20 player in his time. In his time, Misbah was Yeah, actually a really good T20. yeah. So वो तो भी एक बात कंसिडर करने वाली है. But I mean, चलें, I mean वो भी एक बात है कि रिप्लेसमेंट भी देखने पड़ेंगे ना. मैंने अगेन कौन रिप्लेसमेंट्स है? आजम खान इज अ रिप्लेसमेंट. हैदर अली का अगेन वही बात है कि आई रिमेंबर सम स्टार्ट्स जो कि अगेन शायद रेहान हक ने शेयर किए हुए थे, वेयर ही सेड कि यार पिछले 1-2 साल में हैदर अली का रिकॉर्ड हैज नॉट बीन गुड, especially against spinners. हमारी, and again coming to that point as well, कि there was another major weakness that people were identifying कि यार हमारे players चाहे hitters हों भी middle overs में या middle order में, लेकिन वो spinners को नहीं मार सकते, वो fast bowlers को hit कर सकते हैं. Something I think I brought up as well, like especially आसिफ अली का तो खास तौर पर मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ faster bowlers को मारता है. स्पिनर लगाएं तो पहली उसकी एक ही शॉट है, वो यूं करता है, फिर एज मार के आउट हो जाता है, या heaves across the line and he gets bowled. तो आसिफ अली का तो वही है कि हमें पता है कि वो अनलेस के कोई मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर लगाओ उसने नहीं रन मारने. लेकिन बाकी जो है फॉर एग्जांपल खुशदिल का भी और इफ्तिखार का भी ऐसा ही है कि दे आल्सो लुक लाइक पीपल टेक्निकली जो कि फास्टर बॉलर्स को बेहतर खेल पड़ते हैं. इवन दो इफ्तिखार एक्चुअली गॉट आउट ऑफ अ फास्टर बॉलर्स डिलीवरी, लेकिन वही बात है कि डेस्परेशन में जब उन्हें नजर आता है फास्ट बॉलर कि यार अब तो मारना ही पड़ेगा, एंड देन दे गेट आउट बिकॉज दे फेल्ट लाइक अगेंस्ट श्रीलंका दे हैड टू डू इट इमीडिएटली, अदरवाइज फिर दोबारा स्पिनर के सामने आना पड़ेगा. So maybe that's also a problem as well. We need to address, like वही बात है कि maybe have some players who are specialized against hitting spin. क्योंकि पहले तो ये था कि we had both Shoaib Malik and we had Mohammad Hafiz who were actually really good against spin. दोनों की footwork amazing किस्म का था. वो बड़ निकल के वो spinners को मारा करते थे. So उस तरह से we had like two really good players who could actually negate spin bowling really well. चाहे हफीज में और बहुत कमजोरियां थी, but he was a really good player of spin bowling. तो वो एक हमें मतलब ये है कि इस टाइम पे लैकिंग इट इज बिकॉज यू कैन फील लाइक ऑल ऑफ दीज मिडिल ओवर्स जो आपके हैं ना, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम इफ्तिखार, कि ना इफ्तिखार की फुट मूवमेंट है, ना वो क्रीज से बाहर आता है, ना खुशदिल क्रीज से बाहर आता है, ना आसिफ क्रीज से बाहर आता है. ये सब क्रीज के अंदर खड़े होकर मारने वाले प्लेयर्स हैं और स्पिनर्स इनको फंसा लेते हैं बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली इनको बैक फुट पे फंसाए रखते हैं. एंड देयर इज सो हार्ड टू जनरेट पावर ऑन द बैक फुट अगेंस्ट स्पिनर्स. फास्ट बॉलर्स के साथ तो आप कर लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मलिक इसलिए अच्छा था, मलिक निकल के मारा करता था, ये रियली गुड फुटवर्क. हफीज का भी यही था, बड़ा अच्छा फुटवर्क था, निकल के मारता था उनको. इनसे निकल के मारा नहीं जाता. सो वी नीड समवन आइदर हु हैज लाइक इमेंस पावर लाइक आजम खान, कि वो चाहे निकले ना भी, वो खड़े होकर मारेगा तो उसमें इतना जोर है कि वो बॉल वैसे बाउंड्री से बाहर चली जाएगी. एंड ही हैज डिसेंट फुटवर्क एज वेल. बट आई मीन आउटसाइड ऑफ हिम आई कैन रियली थिंक ऑफ एनीवन एल्स. मे बी शर्जील. वही बात है कि अगेन वही दिमाग फिर आइदर शर्जील पे जा रहा होता है या फिर मेरा जा रहा होता है आजम खान पे, बिकॉज आई कैंट रियली थिंक ऑफ एनीवन एल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है पाकिस्तानी, एटलीस्ट डोमेस्टिक सर्किट पीएसएल में. एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम. आई थिंक कमिंग बैक टू अ बिगर इशू विच इज़ कि जी हमारे डोमेस्टिक लेवल पे कोई बंदा है ही नहीं जो गियर स्विच कर सकता है. इक्का दुक्का है. फ़खर में से एक है हु इज़ जस्ट टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म. अदर पीपल हु कैन एक्चुअली स्कोर क्विकली आर ऑल राउंडर्स. आपका नवाज है या आपका शादाब है, who can like score at 200 plus strike, 200 के strike rate पे जो स्कोर कर सकते हैं, इनका मुझे पता है. बट इन टर्म्स ऑफ लाइक जो आपके प्रॉपर बैट्समैन हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है. देर ऑल लाइक वो बस प्रॉपर ही खेलते हैं. बाबर भी, एंड यू मेड अ गुड पॉइंट, देर लाइक गुड ओडीआई प्लेयर्स. लाइक अगर हम ले भी आते हैं अपना शान को भी, तो शान इज ऑल्सो अ ग्रेट ओडीआई प्लेयर.
कि उसका भी जो लिस्ट ए की एवरेज है 758 की है, बाबर की 60 की एवरेज है, इमाम भी हमारा है, ही इज आल्सो लाइक एवरेजिंग समवेयर अराउंड 54 और 73 के आसपास. सो वी हैव रियली गुड ओडीआई प्लेयर्स. बट मसला ये है कि उनमें वो एबिलिटी नहीं है स्विच करने की जो कि T20 में आपको चाहिए. प्रॉब्ली बेटर ऑफ हैविंग like players who can score quick 20-30 runs rather than people who can score maybe 50-60 runs off like maybe 40 balls. आपका बंदा बेहतर है जो कि मैं 10 बॉलों पे 20 रन मार ले या 10 बॉलों पे 25 रन मार ले. that guy is actually preferable to someone like that. You can end of the day इस तरह के आपको चाहे 5-6 लोग होंगे आपके पास तो you can actually end up with a huge score. लेकिन मसला है कि हमारे पास एंकर्स ही एंकर्स है पूरी टीम में शुरू से लेकर आखिर तक, और एक्सेलरेटर्स बिल्कुल, और Except एक्सेलरेटर for हमारे पास कोई नहीं Naseem. एक्सेप्ट फॉर नसीम. हाँ नसीम तो हाँ हिट या आउट सेम. और हसन अली का भी है, वो भी आएगा पहली बॉल पे सुई पे छक्का मारने की कोशिश करेगा. Yeah. लेकिन अगेन उसमें प्लस यही था कि एट सम पॉइंट हमारा ये एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था कि हैड अ डिसेंट इनफ स्टार्ट. बाबर की फॉर्म गद्दी थी, इसकी शिट फॉर्म थी, फिर इफ्तिखार और ये खड़े हो गए, एंड देन एट सम पॉइंट मुझे लगा 10 ओवर पे कि शायद कुछ कर लें because they had a partnership going, थोड़ा एक्सेलरेट भी कर रहे थे. मैंने कहा अच्छा ठीक है, if they keep accelerating then we have a chance. और उस टाइम भी ब्रेकें लग गई, और वही बात है कि हसरंगा आया और उसने बिल्कुल सबको वाड़ के रख दिया. मतलब एक ओवर में 3 विकेटें उसने निकाल ली, और उसके बाद तो इट वाज जस्ट प्रीटी मच ओवर आफ्टर दैट, क्योंकि जब उनके सब ने आगे हिटिंग करने की कोशिश की, वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हिट दैट गाय, और किसी से भी उसके बल्ले पे चढ़ी नहीं रही थी उसकी बॉल, and they just kept losing one wicket after the other. So, and again, आखिर में लेकिन the margin we lost by someone interestingly mentioned कि was around like 23 runs or so. या इतना कोई runs थे, 23 or 25 runs कितने थे, लेकिन उसने कहा था this is about the same number of runs we lost because of the fielding errors. And going back to the first innings, that we did not mention that particular thing, कि जो fielding errors हमारे आखिर में हुए थे, which could have saved us about 20 runs. And वही बात है कि अगर हमारा टारगेट, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान टीम कुड हैव चेस्ड 140 150, जो इतनी विकेट की गिरी वाज बिकॉज दे वर ट्राइंग टू हिट आउट. अगर फॉर एग्जांपल टारगेट होता है 140 150 तो दे एक्चुअली वुड हैव केप्ट दोस विकेट्स एंड स्टेड एट द एंड, और वही जो उनकी नॉर्मल स्ट्रेटजी होती है, ये प्रॉब्ली चेस कर लेते. 140 150 से हो जाना था चेस आराम से, क्योंकि स्पेशली इन द पोजीशन दैट they were very well positioned for that, क्योंकि वही बात है 70 रन बनाए एक पहले 10 ओवर में, 70 रन मजीद बनाए अगले ओवर में 140 150 के आसपास, यू कैन मैनेज, ठीक है, हो जाना था. और स्कोर भी इनका इतना ही बनना था श्रीलंका का. but those extra 20 runs that they conceded because of those fielding errors at the very end, especially शादाब के, वही बात है कि that probably cost us a lot. एंड वही बात है कि उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पाकिस्तानी टीम को मिल गया था. अगेन वही बात है कि अगर ये हो जाता तो वो हो जाता, और अगर वो हो जाता तो ये हो जाता. वो क्या कहते हैं हमारे आंटी हैड वी यूज्ड टू बी अ बाइसिकल वाली बात. Yeah. तो I have like something to add here. I think I think टीम में प्यार इतना बढ़ गया है, अब जब कैच भी पकड़ना होता है ना तो वो बॉल को नहीं पकड़े कि वो एक दूसरे को पकड़े. आजा यार गले Yeah. लग जा. हाँ So नहीं, वो बात है कि जो लोगों ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी की पाकिस्तान की बात की, आई डोंट माइंड इट एज मच. आई थिंक इट्स स्टिल देयर आर डेफिनेट एडवांटेजेस टू दैट, एंड मे बी लॉन्ग टर्म में होगा इस चीज़ का फायदा. लेकिन अगेन वही बात है कि दे वर, आई थिंक इफ यू कैन पॉइंट टू अ कपल ऑफ फैक्टर्स in the Pakistan team, Pakistan losing, of course, an amazing innings by Sri Lanka, their better strategy as well. Pakistan's slightly inferior strategy with also the additional problems of their top two or players out of the top being in terrible form, sort of exacerbated by our inability to hit spinners. Just kind of culminated in Pakistan losing this game. Again, वही बात है कि it's a game of fine margins. हमें even Pakistan और India matches की बात की थी. India doesn't essentially have a bad team. It's just fine margins की बात है. And again, coming to that, कि sort of looking ahead, we might say कि, and I'm not sure about this because obviously the next thing we're looking forward to is the World Cup. So I do wonder if the spinners will have as big of an advantage in Australia as they do in like these particular conditions. वहाँ पे जाके शायद ये श्रीलंका की स्ट्रेटजी ना चले. यहाँ पे इट वर्क इफेक्टिवली, बट वहाँ पे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि स्पिनर्स माइट नॉट हैव मच ऑफ एन एडवांटेज, इट माइट बी अ लॉट इजियर टू काइंड ऑफ फेस देम. बट अगेन आई डोंट नो द कंडीशंस एज वेल. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं तो स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा. सो हु नोज, पाकिस्तान स्ट्रेटजी माइट वर्क ओवर देयर. बट अगेन
there is a distinctive, sort of consistency to the batting lineup, and that is a problem in some ways, in the sense that every single person that we know in the batting lineup bats at sort of a very similar pace. There's no person that I can look to who would accelerate, at least from the top order. And even if we change things up, there's very few players that we can, rely on to go out there and, kind of hit out. And even अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पास होंगे यार एक या दो players जो specialist हमने रखे हुए हैं, इनका काम ये है कि आसिफ अली, the only reason he's in the team is simply because he's the only person capable of going out there and just absolutely going berserk. वरना जो आपने बात की थी कि इंडिया के जो top 4 batsmen हैं, all of them can do what Asif Ali does, and they can do it far more consistently. And they can also defend and bat properly and face all kinds of bowling, whether it's spin bowling or fast bowling. आसिफ अली की तरह कि जो ठीक है आखिरी 5 ओवर, उसका तो वो ये ना कि आपके 1000 कंडीशंस जो मीट होंगे जी, आखिरी 5 ओवर होंगे, स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर लगा होगा, और अगर उसने मुझे डिलीवरी जगह पे कराई तो मैं कदम पीछे लेके छक्का मार दूंगा. तो वो वाली जो उसकी एक स्ट्रेटजी है आसिफ अली की, वो तो मतलब वही बात है कि इंतहा के जो एक्सट्रीम कंडीशन सब चीज़ें आपस में जो होता है ना कि जी शनि जो है वो इस क्वार्टर में होगा, और जो है नॉर्थ स्टार जो है वो इस एंगल पे होगा, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ हमारा होगा, तो फिर हमारा बैट्समैन चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलने वाला. वी नीड मोर प्लेयर्स हु आर प्रॉपर बैट्समैन हु कैन आल्सो एक्सेलरेट व्हेन नीडेड. कोई बात है कि और उस तरह के, एंड दैट्स समथिंग दैट ये एक लार्जर इशू है जो कि पीसीबी को देखने के लिए मतलब देखना जरूरी है कि बिकॉज व्हाई इज इट दैट वी डोंट हैव those kinds of batsmen, and the most we're doing is producing like slightly better ODI players at this point. We're not really producing like specialist T20, which we should have done, and we have a lot of good T20 players, but this one particular aspect is still kind of missing. कि वो जो clever किस्म के आपके थे batsmen, जो कि हैदर अली to some extent था before he actually lost his form, someone who could go out there, accelerate and hit out and all that. Even वही बात है कि he couldn't do it consistently enough, and to some extent like peak क्या आप कह सकते हैं उमर अकमल टू सम एक्सटेंट था कि उसमें भी एबिलिटी थी कि ही कुड जस्ट गो आउट देयर एंड ब्लास्ट बॉल्स. बट अगेन वही बात है कि if we are desperate enough to mention Umar Akmal, that in itself is a huge problem. क्यों? क्योंकि बात है ना शर्जील की, आजम खान की और उमर अकमल की बातें हो रही हैं, तो आप खुद इमेजिन करिए how desperate things really are. I think that's a bigger problem, जो कि उसकी तो पॉइंट कह रहे हैं ना. I think एक चीज I want to point out, it's not exactly the end of the world, is it? Because let's face it, Pakistan is one of the best T20 sides in the world right now, if not the best. And the thing is, if you look back at all of the good teams in history, right, you've never really had a flawless team. I think the Australian team is the closest we've ever gotten to a flawless team, but उनको भी हराने का तरीका था एक. So I think there's always that crack in the system in any good team. India का भी crack है, West Indies का भी crack था, and I think हमारा भी crack. So like we have like that formula जिसमें 70% of the time we can win a match comfortably, but there's always that 30%. And not to say कि हमें 30% cover नहीं करना चाहिए, because I think the goal should be to move towards that 100%. But like वो crack तो रहेगा, कोई ना कोई problem आ जाएगा. Like अभी like say if we start working towards better hitters, then we might not have people who can consolidate the innings. So that sort of balance is hard to maintain consistently. So just some positivity, because like there's always like casuals and ex players that are going to be like, oh हम तो कह रहे थे पाकिस्तान टीम का बुरा हालत है. बुरी हालत नहीं है, let's face it. That's a bit of an exaggeration. This is that कि वो जो हम 10% मैचेस जो नहीं जीतते ना, हम क्यों नहीं जीत रहे, and we need to take some steps to like sort of cover that up. But like, at the end of the day, there's a way to beat every side, and Sri Lanka found our way. So I think हाँ वही बात है, and Sri Lanka had the same kind of sort of momentum as well that we had during like the 2017 Champions Trophy as well, where the team had a certain strategy that it was able to apply and apply against literally every team. Like आप सोचिए इंग्लैंड को हमने बिल्कुल यूं swat away कर दिया था with that strategy. Like and England was one of the best teams in the world at the time. और इंडिया ने जिस तरह हमें बिल्कुल लताड़ के रख दिया था, उसको हमने किस तरह से उठा के मारा था फाइनल में. तो वही होता है कि there is a certain thing to be said about momentum as well. And I don't think the Sri Lankan team can carry that momentum forward for that long. क्योंकि वही होता है कि जब इस तरह का मोमेंटम आपका बन जाता है, क्योंकि कंसीडर करेंगे उससे पहले टूर्नामेंट्स आउट होने वाले थे, ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे, सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाली थी उनकी. तो इट्स नॉट लाइक दे विल बी एबल टू कैरी दिस फॉरवर्ड टिल द वर्ल्ड कप. आई थिंक दे विल स्टम्बल, एंड आई थिंक दे वोंट बी डूइंग एज वेल ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल. तो वहाँ पे पहुंचेंगे तो आई थिंक उनकी टीम पे डाउन हो जाएगी. अब उन पर्टिकुलर पिचेस पे, उन कंडीशंस में आई थिंक उनकी स्ट्रेटजी नहीं चलने वाली.
Pakistan is probably more likely to have more success over there. Yeah. Because I think हमारी strategy वहाँ पे probably बेहतर तौर पे चल सकती है, and our fast bowling attack again will be extremely effective over there as well. लेकिन again we will be depending heavily on our bowling and less so on our batting. Unless वही बात है कि हमारे बैट्समैन भी बीच में फॉर्म पकड़ लेते हैं. If they come back into form तो again वही बात है जो हमारी पहली स्ट्रैटेजी चल रही थी कि हमारे टॉप 3 आएंगे वही सारे रन मार के चले जाएंगे. Consistently हम 170 180 मार रहे होंगे. And our bowling is good enough to get most people out for like 140 150 on most occasions. और अगर इक्का दुक्का टाइम बना भी जाते 170 तक जाएंगे ना टीम if it's in form can change 170 180 as well. तो वो उस तरह से आपका है कि अगर वो अपने प्लेयर्स की फॉर्म वापस आ जाती है तो स्ट्रैटेजी स्टार्ट वर्किंग अगेन. स्ट्रैटेजी में एसेंशियली उतना मसला नहीं है, लेकिन अगेन वही बात है कि द बिगर प्रॉब्लम इज कि द मैचेस दैट वी हैव लॉस्ट इन एग्जैक्टली द सेम वे, and you don't really see like a strategic shift for that or maybe a strategic flexibility that's required to face those games, even though chale kuch na kuch. I feel like Babar's captaincy is kind of underrated as well. I think he makes a lot of bold decisions. Sometimes they work, sometimes they don't. But I still feel like at least nazar aa raha hai ki banda soch raha hai ya kuch karne ki koshish kar raha hai, experiment kar raha hai, like he's thinking on his feet. So I mean I appreciate that fact about it कि वो लग रहा है कि कुछ वो actually सोच समझ के कुछ कर रहा होता है. चाहे चले या ना चले वही बात है कि there's no guarantee 100% तो नहीं होता. चाहे जितना अच्छा कैप्टन क्यों ना हो कुछ स्ट्रैटेजी चल भी जाएगी. So I mean in that sense yes, I think that's a positive as well. So I guess वही बात है onwards and upwards जो भी हुआ. The tournament itself was good, lots of good moments overall. So I mean just before we conclude, let's just want to talk about what's your like moment of the tournament for the Asia Cup, the thing that's kind of stuck in your mind. Stuck in my mind. The match we won against India, that's hard to sort of हाँ pick as no like to था. हाँ but that's an overall Um, match. जो आपको याद हो या कोई इस तरह की चीज हो I think that that you the Naseem, recall. I think the this team Naseem has to ka be the this thing yeah, has to be that. Even though like there were some great moments, like I would say the dismissal जो कि इसने किया था, वहाब व्यास कह रहा हूँ अपना जो what was his name? देखें I have such bad memory for names. लेकिन बहरहाल coming back to that कि नसीम शाह का जो था, I think that has to be it. Like the दो छक्के उसने लगातार दो बॉलों पे मारे थे. I think that is the moment for me. Even though technically considering that we played India twice, having a moment that does not involve India is quite something. yeah, But I think yeah, that says speaks a lot for that particular game, and just like the passion of that game. I mean, मजा बहुत आया. The same way, I think this tournament is very similar to the one we जिसमें आफरीदी ने छक्के मारे थे. कि हमें ये moments याद रहेंगे, हमें नसीम के दो छक्के याद रहेंगे, हमें वो इंडिया खिलाफ सेकंड लास्ट बॉल पे विक्ट्री याद रहेगी. We will remember those matches a lot more than we will remember the result of the tournament. And yeah, I mean, yeah, in a way, that's a very big aspect of the Pakistani fandom. कि हमें जो सब वहाब रियाज का हमें स्पेल अभी तक याद है. इवन दो वही बात है कि उस पूरे स्पेल को आप देखें तो उसने मर के दो विकेटें नहीं थी and Pakistan ended losing the match by a mile. लेकिन we still remember that spell because of the visceral reaction it kind of brought on yeah. in this. हाँ तो मतलब वही बात है कि yes, I mean this tournament will kind of be remembered in that way for us. We will have a lot of great memories from it, and maybe we will kind of over time forget the actual winner and the actual result. Something. Like I think some commentators ने जब पहला मैच था पाकिस्तान इंडिया का, I remember this particular line where they were saying कि oh this might be the most competitive Asia Cup yet. I'm like क्या बकवास कर रहा है? It's like दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है. यहाँ पे हांगकांग तीसरी टीम है तो जगह नहीं बन रही थी किसी और एशियन टीम की. So like, but no, they knew what they were talking about because like. This was the most competitive Asia Cup in recent memory. This was the first time India just didn't fucking swipe everyone aside and win the cup and like warm up matches की तरह treat नहीं किया India ने. This was quite some क्या कहते हैं. This was really good. Like at that point, I think there were three teams. The And Super even 4 teams में like teams थी. Yeah, Super the 4 Super जितनी 4 team थी, में anyone could have won those games. And even yeah, Afghanistan exactly. was competitive. Afghanistan में लग रहा था जीत जाएगा. Like literally, we all thought that Afghanistan can actually win the cup. So and Bangladesh almost knocked out Sri Lanka. They came the closest to actually knocking them out. So वही बात है कि all of them could have actually were in the running. Like there were at least I would say 6 teams in the running to some extent. Yeah.
तो which is quite something for the Asia Cup, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था, वरना तो वही था रियलिस्टिकली आपकी इंडिया होती थी या श्रीलंका होता था। पाकिस्तान भी काफी अर्से आउट रहा था इस टूर्नामेंट में। इवन तो पाकिस्तान टीम नेसेसरली बुरी नहीं थी, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस हमेशा एशिया कप में बुरी रही है। फॉर सम रीजन वी डोंट रियली विन द एशिया कप ऑल दैट ऑफन। हम अच्छा परफॉर्म भी कर लें, हम फाइनल बहुत कम जीतते हैं इसका, सिर्फ इसी वजह से इतने अर्से से हमसे 2 बार जीते हैं। तो वो भी एक बात है। इंडिया ज़्यादा जीता है, श्रीलंका हैज़ एन एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट रिकॉर्ड इन द एशिया कप, सरप्राइजिंगली गुड रिकॉर्ड। तो वो एक चीज़ है, वी हिस्टोरिकली नॉट बीन वेरी गुड एट इट, बट अगेन यस इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू स्टे मोर कंपेटिटिव ओवर टाइम। अफगानिस्तान की टीम has actually getting stronger and stronger over time, and they seem to be accumulating more T20 specialists as they're going along. तो वो next time around और ज़्यादा probably जोर के साथ आएंगे। And बांग्लादेश का भी and we're hoping कि वो भी थोड़ा सा improvement अपनी जो है continue करेंगे। They've kind of been almost sidelined by Afghanistan at this point. तो वो भी एक चक्कर उसमें है। लेकिन anyway, I think overall I mean बुरा दिन तो था, but yes. Thanks हो गई मेरी. I don't know how to say that in English. Sorry, सही it है, was awkward. ठीक है, that's fine, but I'll be about to conclude anyway. लेकिन मैं हमें क्या था कि I just add one final before we conclude, हाँ, because वो तो में रह गया. Asif, if Muhammad Asif for some reason watches a channel with like 10 views, he's gonna hate me for. But like theoretically, because obviously stats का नहीं है, Mohammad Herrera could be a potential replacement for any one of these batsmen, because he's a bottom-handed player and like bottom-handed players जो होते हैं वो hitting के लिए अच्छे होते हैं, and उस मामले में theoretically, and again जब stats fail हो जाती हैं तो we can only look at things in theory, and that's what England does best. They start investing in the theory of things rather than the stats. The stats तो होते नहीं हैं, तो like उस sense में we can look into Mohammad Herrera. उसने तो तक खेला नहीं है, बट चूंकि वो नीचे से पकड़ता है बैट को, तो आई थिंक ही माइट हैव दैट स्विच, लाइक गियर स्विचिंग एबिलिटी. आई रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस लॉर्ड्स की कोहली से बहुत मिलती है टेक्निक, तो मे बी अगेन दैट्स अप इन द एयर. हाँ, we'll see. हुरैरा का वही बात है, पहले मैं सोचा टेस्ट में आए तो उसके बाद देखेंगे कि वो और किसी जगह परफॉर्म करता है, बट वही बात है कि the problem remains we don't have too many options. We are kind of, we कहते हैं कि wild swings इस टाइम पे हम ले रहे हैं कि अच्छा कौन हो सकता है, किधर से आ सकता है. But again, I'd say कि in conclusion, I mean it's been a fun ride for us. वही बात है कि जिस तरह से भी खत्म हुआ, but it was a fun tournament to watch. Lots of like heart attack moments throughout. Not a dull moment in the last couple of weeks for us. Honestly, मजा तो मुझे आया, जैसा तैसा भी ending हुई. That was like very heartbreaking and all. But I think we would go through it again, because that's the whole point of being a Pakistani fan. And with that, I'll see you again at some other point, and see you again, guy, whenever we meet again. Okay. ठीक है, चलें, हो गया, bye.